Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Here today to celebrate Srila Prabhupada's arrival in America. Srila Prabhupada's arrival in America is so important because Srila Prabhupada's going to America created a revolution all over the world, spiritual revolution. And Srila Prabhupada spread Krishna consciousness all over the world. But what is the center? The center of this mission is Mayapur, Sri Chaitanya Mahaprabhu's birthplace. And in that center, we need a remarkable presence of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Panchatattva. And that is the temple of Vedic Planetarium. Another aspect of Vedic Planetarium is that Srila Prabhupada wanted to defeat the scientists. So this Vedic Planetarium will not only be a temple, it will be a planetarium, it will be a scientific arrangement to make the scientists realize that how wrong and how deceptive their presentation is. So Vedic culture will be established to destroy the demoniac culture of this world. And the demoniac culture is established by modern science. The atheistic culture is being established through so-called science, which is not science, but in most cases it's just a bluff. And this Vedic Planetarium is going to be established to make the world see what is the real science, and the real science is Krishna consciousness.
Ajnanamidandasya jananjanan shalakaya chakshuramilitan dina tasmai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Karatha Shivas Adi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. So thank you very much for allowing us to say something in glorification of Srila Prabhupada on this very auspicious occasion of the Vyasapuja ceremony of His Holiness Srila Bhakti Charu Swami. Thank him very much for giving this opportunity to associate with all these devotees and attend these wonderful programs. Hare Krishna. So, Srila Prabhupada as the founder Acharya of ISKCON, we have to follow in the footsteps of the Parampara. This is the only hope for the world. And this was the greatness of Srila Prabhupada. He came to represent the Parampara connection that gives us a connection to Krishna. So, one time Srila Prabhupada I think he was translating Bhagavad Gita, and his disciple Hari Griva Prabhu was assisting, because he was an English professor, so he was helping Prabhupada to, whatever it does, to make a book. But anyway, they were translating Bhagavad Gita, and then Hari Griva Prabhu said to Srila Prabhupada that, Srila Prabhupada, in this purport, you presented exactly the same purport as this Mayavadi Bhagavad Gita is presenting. And Prabhupada kind of just waved his hand in the air. He said, that's okay. He said, translation. Same translation as the Mayavadi is doing. So Prabhupada just waved his hand and he said, that's okay. Any translation will do. He said, but what is needed is the purports of the Vaishnavas. That is what is lacking in the world today, the Vaishnava purports. So, and he said, we have the translation, you can, if the Sanskrit is there if you want to translate, but it is the Vaishnava purport. So this is Srila Prabhupada presenting his Bhaktivedanta purports. And there's another incident, very famous incident, that also took place in Mayapur. And Srila Prabhupada asked Hari Krishna Prabhu to go to Russia to preach Krishna consciousness. And Hari Krishna Prabhu said, but Srila Prabhupada, they only eat meat in Russia, there's nothing else to eat. And Prabhupada said, then eat meat. And he said, but Prabhupada, what about my consciousness? Prabhupada said, to hell with your consciousness, go and preach in Russia. So this is... in other words, that it's not just pure consciousness that we're striving for pure consciousness, we're encouraged to, but this is not just pure consciousness alone. It's the mercy of the acharyas that is needed, and that is what makes it all go. I think Bhakti Charu Maharaj read this morning, it was probably in the translation, or was it yesterday? Talking about the Vaishnavas, and it said, it's the Vaishnavas, the devotees, that give everything a finishing touch. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna, thank you. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada ki jai. 1965, I was a very young man. I can remember what I was thinking about in the 10th standard of high school. All the usual things, but also thinking about the state of the world, because the Vietnam War was raging. At that time it had been increasing. I was seeing my schoolmates getting out of school and being immediately taken into the army, not on their own will, but by the force of the government.
sent to fight in the jungles of Vietnam. This is the time that Srila Prabhupada arrived. It was a time that many of us can't imagine. It was a time of great danger in the world. Some of you may be aware there's some group of scientists who came up with a way to represent the risk the world was at with what they call the doomsday clock. The stroke of midnight finished. The world is, practically speaking, at least for humanity, it is no more. They calculated that the force of weaponry, the force of nuclear arms, the force of tension, the tension of the Cold War, the relationships amongst nations at that time put the hands of that clock at 2 minutes to midnight. This was the state of the world in 1965. Great risk. And we just heard how Srila Prabhupada would speak to some of his disciples, go to Russia, damn with your consciousness. Srila Prabhupada didn't think, here I am in Vrindavan, the best place for my spiritual life, the best place for my Krishna consciousness. He couldn't even imagine the world of the US. But he took the risk. He took a risk, a great risk. He didn't know what would happen. He didn't know if he could even survive the trip. And we know that on the trip, he practically didn't survive. But he took these risks so that we could be saved, so that the world could be saved. At one time, I've heard that Srila Prabhupada commented that history will mark how this movement has saved the world. And we may not see this. It may be difficult for us to connect the dots. Well, how did the Hare Krishna movement save the world? Well, first of all, the world is not yet saved. The world is still in deep trouble. Yes, there's been some reduction in tension between the Soviet Union, which is no more, but now we're faced with climate change. Now we're faced with unbridled materialism that is destroying the fabric of culture throughout the world. The world is not, it is yes, perhaps a little safer from nuclear Armageddon, but other things threaten us. So the world still needs our movement. The world needs the message of Srila Prabhupada that he brought to the US shore, taking all kinds of risk, and gave to us. We have the opportunity to take risks ourselves. Today, I think you'll be hearing a little bit about an opportunity, a great opportunity to make a personal sacrifice. Please remember the sacrifices that our dear founder Acharya made to bring us Krishna consciousness, to bring this movement to the world, and join with your full heart. On this day, I pray that Srila Prabhupada will bless me to also have a little of that spirit in whatever service he gives me. Thank you. Hare Krishna. जय श्रील प्रभुपाद। आप लोगों के बीच मैं अपने को उपस्थित पाकर अत्यंत गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ, और उसमें भी श्रील प्रभुपाद के विषय में कुछ बोलने का साहस तो स्वाभाविक मुझे बहुत रोक रहा है। फिर भी लालसा तो है कि अपने जीवन को, अपने जीव को पवित्र करूं। श्रील प्रभुपाद भगवान के एक परम प्रिय परिकर हैं, जो इस जगत में आकर
हमारे जैसे न जाने कितने पतित जीवों को भगवान से जोड़े। ऐसे साधारण प्राकृतिक दृष्टि से हम इन्हें नहीं समझ पाते हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण के साथ बताना चाहता हूँ कि जो आग के संपर्क में रहने वाला एक छोटा सा सरिया धीरे धीरे लाल जब हो जाता है तो उसको एक साधारण लोहा समझना भूल हो जाता है, वो पूर्णतः आग ही है। कभी कभी गुरु तत्व पर हम सुनते हैं और सहज भाव में हम विश्वास नहीं कर पाते। कई जगह शास्त्रों में साधुओं के मुख से सुनने को मिलता है कि गुरु साक्षात हरि है, श्री भगवान है, लेकिन किस सेंस में है इसको समझना चाहिए बड़ी बारीकी से कि भगवान के पास जो ऐश्वर्य है, भगवत्ता है, वह पूर्णतः जो भगवान की कृपा है एक महापुरुष के अंदर उतर कर आती है, इस सेंस में भगवान है। उनके देखने से समुद्र नहीं खोल सकता, वो गिराज नहीं उठा सकते, लेकिन किसी जीव को कृष्ण में जोड़ने में तो कृष्ण के समान शक्तिशाली होते हैं, इसलिए उनको ही डिवाइन ग्रेस कहते हैं। श्री कृष्ण की साक्षात कृपा की प्रतिमूर्ति वो है श्रील प्रभुपाद। उनको साधारण मानव बुद्धि से विचार करने पर बहुत भारी अपराध हो सकता है, तो कृष्ण के कनेक्शन में होने के कारण वो साक्षात कृष्ण ही है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्थता भाव्यते व सद्भी। लेकिन उनका स्वभाव होता है किंतु प्रभुर्ज प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। सर्वदा वो भगवान का सेवक मानते हैं अपने को। तो श्रील प्रभुपाद हमारे जैसे अनेकों को, लाखों को कृष्ण से जोड़े। इनकी कृपा इस रूप में है जैसे एक सरोवर से जो नित्य जल में रहने वाला मछली, जल ही जिनका जीवन है, वो बाई चांस उछलते कूदते अपने आनंद से सरोवर से बाहर आ जाए और अनजान बस वो सरोवर के दूसरे दिशा की ओर जाने लगे, इस खोज में कि हमारा जीवन इसी दिशा में है। कोई कृपावान व्यक्ति, कृपालु व्यक्ति उसके इस दुर्दशा को देख ले और उसके दिशा को सरोवर की ओर मोड़ दे। वैसे ही श्रील प्रभुपाद संपूर्ण जगत जो भले अनजान में सही परम सुख स्वरूप, परमानंद स्वरूप भगवान को ही खोज रहा है, भले अज्ञानवश मृगमरीचिका की तरह सुख का तलाश कर रहा है, लेकिन उसके दुर्दशा को देखकर कि वो अपने सुख स्वरूप भगवान से विपरीत दिशा में जा रहा है, प्रभुपाद वृद्धावस्था में अपने गुरु महाराज की आज्ञा को लेकर पाश्चात्य जगत में गए। उनसे अनेकों प्रश्न भी किया गया कि आप एक साधु होकर, भारतीय साधु होकर जो पैदल चलते हैं, आप प्लेन से यात्रा कर रहे हैं। प्रभुपाद तुरंत निसंकोच उत्तर देते थे, जरूर, इसलिए कि लोग बड़े तेज गति से नरक की ओर जा रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए मैं तेज यात्रा करने वाले विमान का प्रयोग कर रहा हूँ। उनको रोकना चाहता हूँ कि लोग बचें, जितना मेरी सामर्थ्य है, शक्ति है, उनको रोकना चाहता हूँ। इंग्लैंड में कोई उनसे प्रश्न किया कि आप लोग यहाँ आकर उपदेश करना चाहते हैं, आपको संकोच होना चाहिए, हम लोग आपके ऊपर शासन किए, बहुत लूटे। प्रभुपाद कहे, हाँ, मैं यही तो बतलाने के लिए आया, जो हमारी भारतीय संपत्ति है उसको आप नहीं लेकर आए, बहुत कुछ लेकर आए, लेकिन असली ज्ञान जो है भगवत गीता और भागवत को, उसको छोड़ कर आए, तो मैं वह असली संपत्ति देने आया हूँ, आप इसको स्वीकार कीजिए। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद बहुत सारी शिक्षा दिए और इनके ग्रंथ पढ़ने से ऐसा लगता है कि हम लोग वास्तव में साधु के नाम पर कलंक हैं, आलसी हैं। प्रभुपाद वृद्धावस्था में जो उत्साह है, ग्रंथ को छाप कर लोगों को देने की जो भावना है, केवल इसलिए नहीं कि ग्रंथ का प्रचार हो, मेरा नाम हो, जानते थे, कहते थे कि मैं दिव्य ज्ञान दे रहा हूँ, निश्चित रूप से इसके टच में आने वाले लोग कृष्ण को समझेंगे। मैं साहित्य लिख रहा हूँ भगवान के विषय में, मैं अपने गुरु महाराज की आज्ञा से लोगों को कृष्ण से जोड़ रहा हूँ, और जब अधिक से अधिक
बुक डिस्ट्रीब्यूशन का न्यूज सुनते थे तो बहुत खुश होते थे कि लोग कृष्ण से के संपर्क में आएंगे। तो इस प्रकार भले ही हम अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें दिन रात प्रभुपाद के इस मैसेज को सारे जगत में फैलाना चाहिए। जितना सामर्थ्य हो उतना, जैसे कर सकें वैसे हमें आलस छोड़कर, बहुत सुख सुविधा को छोड़कर श्रील प्रभुपाद के कार्यों में लगे रहना चाहिए। और हमें विश्वास है कि प्रभुपाद निश्चित रूप से हमारे कार्यों से प्रसन्न होंगे। यद्यपि हम प्रभुपाद की तरह, सूर्य की तरह जगत में प्रकाश तो नहीं दे सकते, लेकिन जितनी सामर्थ्य है उतना ही हमें अवश्य करना चाहिए। इनके इस महोत्सव पर जो आज अमेरिका जाने की उत्सव मना रहे हैं, तो इस अवसर पर हम प्रभुपाद को अपने वाणी से, अपने कर्तव्य से, अपने व्यवहार से अवश्य संतुष्ट करें कि श्रील प्रभुपाद हमें आप शक्ति दीजिए। आज इस अवसर पर हम आपसे भीख मांगते हैं। आप महावदान्य के कृपा पात्र हैं, उनके परंपरा में हैं। आप कृपा देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। हमें अवश्य कृपा दीजिए। हमें विश्वास है कि आपके कृपा के बल से हम आपके कार्य आ सकेंगे। इस रूप में हम इस महावदान्य से भीख मांगते हैं और इनके परंपरा में आने वाले वर्तमान आचार्य सब लोगों से हम प्रार्थना करते हैं। मुख्य रूप से परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी, जिनके आज जन्मदिन के अवसर पर हम वास्तव में एक भिखारी की तरह भीख मांगने के लिए आए हैं कि जिस तरह आपने अपने जीवन को श्रील प्रभुपाद के चरणों में समर्पित किया और ठीक ढंग से समझा और आजीवन उनके इच्छा के अनुरूप चलने का संकल्प लिया, आप कृपा करके वह शक्ति हमें भी प्रदान करें कि हम आपके काम आ सकें। जय श्रील प्रभुपाद। Srila Bhaktivinoda Thakur has revived our tradition. And then Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj, he spread it all over the India. He created an institution to make this possible and spread it all over India. Then Srila Prabhupada, as an instrument in the Guru Parampara, he spread Krishna consciousness all over the world. And he established the International Society for Krishna Consciousness. Now, wherever you go in ISKCON, in all our temples over the world, there are devotees. Every devotee will claim that he has a relationship with Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, in the form of his instructions, is in his books, but just not only in his book, is factually the life and soul of all devotees in ISKCON, and is guiding them in many ways. When I came to the movement in 1985, at that time I came in contact with Srila Prabhupada's books, and I received a copy of Krishna book. And I thought it was just some Indian mythology, some stories. And I started to read this book, Krishna book, every evening, a few pages. And I went to it every evening during 4 years. And after some time, I understood, yes, Srila Prabhupada is answering all the important questions of life. Now I get the answers. When I finished the book, Krishna, through Srila Prabhupada, brought me in contact with his bona fide representative. And then I started to chant 16 rounds, and I started
to chant 16 rounds of the Hare Krishna mantra. And then, a few days after I started the chanting, I got a dream. And Srila Prabhupada appeared in my dream. And he was sitting before on a Vyasasan, and he had different booklets in his hand. And he took one booklet, looked at me, and gave it to me. And he said, "This is your passport for the spiritual world. But now you have to work on your visa." So in that way, Srila Prabhupada is guiding all of us until today. He's not just the head of the institution, is factually guiding every one of us individually. If we continue to take shelter of Srila Prabhupada and put Srila Prabhupada in the center of all our activities in ISKCON, then our movement will continue to be successful and expand unlimitedly. Thank you very much. Hare Krishna. कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात दिशतारिणे वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So I feel really unqualified in the assembly of so many senior devotees and to glorify Srila Prabhupada on the auspicious day of his arrival in USA. And today is also a very special day. We are celebrating the Vyasapuja of His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj. So Srila Prabhupada is a very special Acharya, and he has been selected by Chaitanya Mahaprabhu to do this impossible task in the history of Vaishnavism. And he has predicted that in Chaitanya Mangal that he will take this message to the Western world. He is my Senapati Bhakta. And I was thinking that only Mahaprabhu might have known that. But I was hearing an amazing story recently. It was in Bombay, and Srila Prabhupada was Abhaycharan that time, and he was also in Bombay, and Bombay Gaudiya Math temple was built. And the in charge of the temple was Bhakti Saranga Maharaj, and he told Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, praising Abhaycharan, that Guru Maharaj, Abhaycharan is very wonderful. He raised a lot of fund to build this temple. So why he is staying outside? He can come into the Gaudiya Math and he can become the temple president of the temple. In the response to that, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur said, it's nice and better that he stays out of Gaudiya Math. One day will come, he will do everything, and for that you don't have to recommend to me. So by this story we can understand that Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur also knew very well that the message of Chaitanya Mahaprabhu will be spread all over the world by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. And another confirmation, another amazing story from Bhavananda Prabhu. So don't ask me where he said to him, you can ask him directly, the route. And he was telling in Mayapur on the auspicious disappearance day of Srila Prabhupada, he said, Krishna told Prabhupada, go to the material world and spread the message of Chaitanya, spread the message of me. Then Prabhupada responded, I don't want to go. That is a horrible place. I cannot sleep under the tree like the Goswamis of Vrindavan. Then Krishna said, don't worry, you don't have to do like that. I have arranged everything. Go, write your books and come back. So then Prabhupada established this movement
and so worldwide movement, when he'll get the time to write books, whole day he is busy. So he prayed to the Lord and told, my dear Lord, please take away my sleep. And by the mercy of Krishna, Prabhupada never slept. Just for 2 hours rest in the night, he used to get up and write Bhaktivedanta purports. So Prabhupada's life was life of preaching. Daytime, he used to meet people and give Krishna consciousness. And other people who could not meet Prabhupada, he also made arrangement for them by writing these Bhaktivedanta purports. In the future, everybody will be benefited by this Bhaktivedanta purport. So this is the life of Srila Prabhupada. And Prabhupada said, I have a problem. I cannot think small. So when he had only 1 or 2 temples in America, he had a visiting card. A.C. Bhaktivedanta Swami, founder Acharya of the International Society for Krishna Consciousness, having centers all over the world. But one disciple said, Prabhupada, we only have 1-2 centers, and you are writing that we have centers all over the world. And Prabhupada said, yes, all the centers are there, but time is separating us. It's a matter of time to manifest. And time is limited. I'll tell a very recent story to share how powerful Prabhupada is. He's not an ordinary personality. So it's a journey in a plane in the South America, from Mexico to Caracas. And Srutakirti Prabhu was the secretary with Srila Prabhupada. And the plane, Prabhupada was a little hungry, and he was taking puffed rice with peanut. I think it's Prabhupada's one of the favorite at night. So he was taking that for 10 minutes, and after taking that puffed rice, he gave it to Srutakirti Prabhu. And Srutakirti Prabhu gave a portion to Paramhamsa Prabhu, who was also there, and he kept something for him in front of him. So suddenly one air hostess came in front of Srutakirti Prabhu and grabbed some puffed rice and put in her mouth. He said, what is this? It's wonderful taste. He said, it's puffed rice. He said, then she asked, why are you eating this? He said, we are Krishna's devotees. We don't eat other things. We are vegetarian. Then she asked, can I give something also to eat? Then Srutakirti Prabhu looked at Prabhupada, and Prabhupada said, hot milk, hot milk. Then she arranged hot milk for 3 people. Then after she left, Srutakirti Prabhu asked Prabhupada, is it not amazing, Prabhupada? Prabhupada said, no, it's not amazing. It's natural tendency of the ladies to serve. But Srutakirti Prabhu wanted to tell that how amazing it was that she grabbed the puffed rice and ate, but Prabhupada did not say that. And this story was told by Srutakirti Prabhu, and he was telling this story in Brazil. And one Sankirtan devotee came up to Srutakirti Prabhu and told Srutakirti, it's an amazing story you told, but I want to share with you another story. Do you like to hear that? He said, yes. He said, I was in Brazil and doing Harinam and book distribution, and we went to a far out village, far away from the cities. And we are doing Harinam, and after Harinam, we are distributing books door to door. So we knocked at the door of one house. One lady came out, and as soon as that lady saw me with dhoti and kurta, she invited me with a lot of love and respect. And when the Sankirtan devotee entered into the house, he saw the beautiful picture of the Lord Krishna, and he also saw there was an altar of the Lord. And then he asked, are you a devotee of Krishna? He said, yes. It's very amazing, such a far out place, here there is a devotee also. So how did you become devotee? And she said, that's a very interesting story. So I was an air hostess, and 10 years before, and I met Srila Prabhupada, and I took some puffed rice from him, and that's the end of my life, and I became a devotee of the Lord. So this is the potency of Srila Prabhupada, and this story goes on and on. So time is limited. Thank you very much. Hare Krishna. Jai Shri Prabhupada. Jai. Hare Krishna. To those who do not understand Bengali, please forgive me for a few minutes.
I'll just read a poetry on Bengali. This is Srila Prabhupada Chamatkar Chandrika. तिथि नंदोत्सवे तब आविर्भावे पिता गौरमोहन तमार जननी श्रीमती रजनी सह आनंदे मगन आत्मीय स्वजन अभय चरण नाम राखिल तमार दैवज्ञ तमार कुष्ठीर विचार करी लभे चमत्कार 70 বছর বয়সের পর পাড়ি দেবে পারাবার সুদূর বিদেশে অতীব সাহসে করিবে ধর্ম প্রচার অষ্টোত্তর শত মন্দির গড়িয়া দিবে ভক্তি উপহার একথা শুনিয়া পিতামাতা তব লভিলে যে চমৎকার পিতার সহায়ে অতীব আগ্রহী রথোৎসব আয়োজিলে আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী সহ শ্রী জগন্নাথে মজিলে 5 বছরের ছেলে তুমি তখন নয়নে প্রেমাশ্রুধার তোমার ভকতি দেখিয়া সকলে মনে পাইল চমৎকার কিশোর বয়সে বিদ্যার বিলাসে উল্লাসে কাটালে কাল স্বাধীন সংগ্রামে ছিন্ন করিবে পরাধীনতার জাল বন্ধু অনুরোধে বৈষ্ণব দর্শন ভাগ্যে ঘটিল তোমার ভকতি সিদ্ধান্ত প্রভুপাদ সঙ্গ লভি পেলে চমৎকার প্রচারের তরে অতিকাতরে ত্যজি চাকুরি জীবন শ্রীগুরু সেবায় করি ব্যবসায় কইলে আত্মীয় পালন পরিবার জনে অতি সন্তর্পণে শিখাইলে সদাচার তোমার আদর্শ গৃহস্থ জীবন বাস্তবিক চমৎকার পাশ্চাত্য জগতে প্রচার করিতে আজ্ঞা দিলে গুরুবর কায় বাক্য মনে সে আজ্ঞা পালনে বিশেষে হলে তৎপর গুরু মুখ বাক্য চিত্তে করি ঐক্য অন্য আশা নাহি আর তোমার অদম্য প্রচার উদ্যম সত্যিই তো চমৎকার শ্রী গুরু গৈঙ্কর্য সাধনের তরে নিজ জনে পরিহরি ছাড়ি গৃহপাস করিলে সন্ন্যাস স্বহস্তে ত্রিদণ্ড ধরি জীবে দয়া আর শ্রীনাম ভজন সর্বধর্ম সারাৎসার তোমার এহেন দৃঢ় নিষ্ঠা হেরি লোকে বলে চমৎকার গীতা ভাগবত গ্রন্থ তুমি কইলে ইংরেজিতে ভাষান্তর ভকতি বেদান্ত তাৎপর্য প্রদানে হলে তুমি অগ্রসর পাশ্চাত্যে গমন কিভাবে সম্ভব মনে ভেবে বারম্বার ভারক্রান্ত মনে চিন্তন করিলে অর্থ চিন্তা চমৎকার পাশ্চাত্য গমনে সাহায্য কারণে ভিক্ষা কইলে অনুগ্রহ বিধির বিধানে সুমতি দেবীর সুমতি হল উদয় অনিচ্ছা সত্ত্বেও জলদূত জাহাজে লয়েছ ব্যবস্থা ভার তোমার প্রচারে উৎসাহ দেখিয়া ভাবিলেন চমৎকার সামুদ্রিক পীড়া কহনা না যায় বমি হলো বারবার মাথা তো ঘোরালো অস্বস্তি বাড়ালো বৃষ্টি হলো জোরদার প্রবল ভাবেতে বুকে ব্যথা হয়ে হার্ট অ্যাটাক দুবার কৃষ্ণ কৃপা সিন্ধু স্বপ্নে দেখা দিয়া করিলেন চমৎকার কৃষ্ণ বলছেন তোমার নৌকার কাণ্ডারি যে আমি শুনো হে বন্ধু অভয় তোমার নিকটে আমি সদা থাকি তবু কেন পাও ভয় ভকত বৎসল নাম যে আমার তুমি যে ভকত সার সেনাপতি ভক্ত তুমি তো আমার ভক্ত মধ্যে চমৎকার কৃষ্ণ কৃপালভী সুখ অনুভবী শরীরে পাইলে বল শ্রীবৃন্দাবনের বিগ্রহগণের বিরহ ভাব প্রবল চৈতন্য চরিতামৃত চৈতন্য চরিত অধ্যয়নেরত গৌর লীলা রসসার আস্বাদন করি গৌর হরিস্মরী পাইলে চিত্ত চমৎকার নিঃসহায় আর নিঃসম্বল ভাবে মার্কেনে আসিলে তুমি 40টি টাকা হাতে নিয়ে তুমি ত্যাজিলে ভারত ভূমি শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ বাণীতে প্রগাঢ় বিশ্বাস হয়ে যার সেই তো বুঝিবে তোমাহেন শুদ্ধ ভগতের চমৎকার রজতমাচ্ছন্ন বিষয় লোলু পাশ্চাত্যবাসী নিকট দেহ নই মোরা বিশুদ্ধ আত্মা করিলে তুমি প্রকট শ্রীগুরু উদ্দাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিলে হরিনামে জীবোদ্ধার আম্লেচ্ছ যবনে শিখাইলে তুমি মহামন্ত্রের চমৎকার বিশ্বের সর্বত্র নগরাদি গ্রামে কৃষ্ণ নামের প্রচার গৌরাঙ্গ দেবের সেনাপতি ভক্ত বিনাশকতি কাহার সেহেতু তোমায় শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ সঁপিলে গুরুভার গৌর মনোভীষ্ট পূরণ করিয়া প্রকাশিলে চমৎকার সারা পৃথিবীতে 78শত দেবালয় নিরমিয়া শ্রীগৌর নিতাই রাধাকৃষ্ণ আদি শ্রীবিগ্রহ বসাইয়া আরম্ভিলে তুমি খোল করতাল সহ কীর্তন ঝঙ্কার মধুরাতি মধুর নাম সংকীর্তন শুনি লাগে চমৎকার গৌর পূর্ণিমা জন্মাষ্টমী আর রাধাষ্টমী জন্মোৎসব গৌর পূর্ণিমা জন্মাষ্টমী আর রাধাষ্টমী রথোৎসব 12 মাসে 13 বৈষ্ণব পরব বহুবিধ মহোৎসব নগর শহর উৎসব মুখর হরিনাম করিসার
সংকীর্তন রসে ডুবাইয়া বিশ্বে দেখালে তো চমৎকার। অজয় রসনা খাই খাই করে লোভময় সুদূরমতি, শ্রী মহাপ্রসাদ দানিয়া জীবেরে রসনার কর তৃপ্তি। অমৈথ্য ভক্ষণ ভোলাইলে লোকের প্রদানিয়া দিব্যাহার, প্রসাদ পাইয়া লোকে বলে সব বাহ বাহ চমৎকার। বিষয় লোভ জড়বাদ আর শূন্যবাদ পরিরোধ, অবোধ জলেরে শিখাইলে তুমি জীবনের মূল্যবোধ। পুনঃ প্রদানিলে শ্রীকৃষ্ণ ভাবনা অনুপম উপহার, এভব সংসারে শ্রীকৃষ্ণ ভাবনা সর্বোপরি চমৎকার। দ্বাদশ বৎসরে দেশ দেশান্তরে 14 বার ভ্রমণ, পৃথিবীতে যত নগরাদি গ্রামে হরিনাম সংকীর্তন। শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তি প্রভাবেই তুমি খুলিলে বৈকুণ্ঠ দ্বার, ভগবত ধামে সুগম যাত্রা অপ্রাকৃত চমৎকার। আম্লেচ্ছ যবনে শিখাইলে তুমি শুদ্ধ বৈষ্ণব আচার, পঞ্চরাত্র মতে প্রদানিলে তুমি বৈষ্ণব দীক্ষা সংস্কার। বিশ্বের দিনের কারুণ্য তব অসামান্য, কৃতিপূর্ণ ব্যবহার তোমার সান্নিধ্যে যে জন আসিল সে লভিল চমৎকার। তোমার অভয় চরণে আশ্রিত শিষ্যগণ সুমহান, আমাহেনগত দিনহীন জনে করিতেছে পরিত্রাণ। ত্রিভুবনে এরা রতন স্বরূপ তোমার গলার হার, সর্বদিক দিগন্ত বিস্তারিত করি প্রকাশ এই চমৎকার। বৃক্ষের গুণ ফলে পরিচয় শ্রীগুরু মহিমা শিষ্যে, ভক্তি চারু স্বামী হেন অসংখ্যাত শিষ্যগণ তব বিশ্বে। জগৎ গুরুর পদের যথার্থ তোমারই অধিকার, তাই তো বিদগ্ধ সমাজ বিমুগ্ধ হেরি তব চমৎকার। যোগ্যতা বিচারে কে হবে তোমার বিশেষ কৃপা ভাজন, যোগ্যতা বিচারে কে হবে তোমার বিশেষ কৃপা ভাজন। ভক্তি চারু স্বামী মহারাজে তুমি করিলে মনোনয়ন, ভক্তির সকল অঙ্গ সাধনে নিপুণতা হেরি তাঁর। সেই হেতু তুমি ভক্তি চারু স্বামী নাম দিলে চমৎকার। সকল দিব্য গুণের ভব্য ভাণ্ডার করি দান, নিজ প্রিয়জন মহারাজে তুমি করিয়াছ সুমহান। যিনি সুযতনে দূরদর্শনে করিলেন সম্প্রচার, তব অপ্রাকৃত শুদ্ধ কৃষ্ণামৃত শুদ্ধ শিক্ষামৃত লীলা কথা চমৎকার। নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী শিল প্রভুপাদ আমি তব দাসের দাস, ভদ্রচারু দাস তোমার কুকুর বেঁধে রাখো নিজ পাশ। নিকটে থাকিব প্রসাদ ভুঁজিব ভাব সেবা অধিকার, পুলকিত অঙ্গে গড়াগড়ি দেব দেখি তব চমৎকার।